अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह दुश्मन है तो खा पहले आते हैं क्या फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट वाइफ, फर्स्ट सब कुछ। तो लेट होता है उनकी वजह से, क्योंकि आते हैं 12-1 बजे, एक बार 3 बजे भी आ जाते हैं, तो एक वजह से लेट हो जाता है। उनका वेट करते करते सुबह नींद नहीं है मुझे। कल थोड़ा जल्दी आ गए, मैंने बोला आना तो नहीं था, क्योंकि घर पे आके भी क्या भी फायदा नहीं, फोन कॉल बात होती है। सिर्फ गीजर डालो, शूज दे दो, कपड़े दे दो, टवल दे दो, बस उतनी बात होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैंने आज तक उनको टोका नहीं, ये नहीं करो वो नहीं करो, लेकिन सेहत का ध्यान रखो, जल्दी आके थोड़ा सो जाओ, क्योंकि आप अच्छा रहोगे तो दूसरों को भी अच्छा करोगे। हेलो वालेकुम सलाम दुआ बोलो। हाँ दुआ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೋ ಅದು ಚಟ ಟ್ರೈ ತಗೋಬಿಡ್ಬಿಡೋಣ ಟ್ರೈ ಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಓಕೆ be a little far, this is a 1 week old body. Once lockdown started, couple of other friends started something called Mercy Angels. They were participating in giving a dignified last ride to somebody who was no more. And in that phase where people were scared, they were not venturing out, and where there were so many protocols where faces were not shown and any dead was just disposed of ASAP, I also ventured into Mercy Angels. एक साल से हमें इसमें काम कर रहा है मर्सी एंजल्स में। अभी इधर आ गया मर्सी एंजल्स में, एक खिदमत का काम, एक अच्छा। टोटली हमारा देश का आदमी इतना तकलीफ़ में है, हमें ये सोच के काम पे लगा कि किसी को तकलीफ़ नहीं होना। स्टार्टिंग जो कोविड का केसेस आया, बेंगलोर में कोई कोविड का बॉडी उठाने वाला नहीं था, तो स्टार्टिंग जब हमें गया कोविड का बॉडी पिक करने के वास्ते, तो मिनिमम वो 9 या 10 डेज पुराना था ओल्ड बॉडी, तो टोटली स्मेल कर रहा था।
जब हम ट्रेन हो रहे थे, बट हमारे को मालूम नहीं था कि कैसा कोरोना का बॉडी उठाना है, उसको क्या करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसे कैसे बॉडी पैक करते हैं, ये सब हमारे को कुछ पता नहीं था। उसे क्या क्या हमारा सेफ्टी क्या है, ये सब हमारे को पता नहीं था। My belief is that the body doesn't breathe, so he's less harmful. This is my belief. All said and done, there could, I would say arrogance or conviction. If I have to get infected, if I have to die, my Creator has an anointed time at which I will die. So there's nothing to be scared of. But this is a crisis situation. If somebody has to jump to save somebody drowning, okay, it could be foolish or it could be bravery. I was telling Sadiq, who is my partner, bhai, hamare limited resources rahenge, but we have barakah, we have blessing in what we do. कोई किसी को तो रिस्क लेना पड़ेगा ना मैडम। अभी कोई भी रिस्क नहीं लेगा तो आदमी इधर उधर पड़ा रहेगा। इन्हें फुल पानी छोड़ता है, ये नहीं छोड़ता है ना, फुल आइस बॉक्स में है। 8 दिन से है तो फ्रिज बन गए थे। अभी हमारे देश का काम हम नहीं करेंगे तो हम नागरिक नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? We have another lady inside. She is 37-year-old, very pretty looking. And she had no family. Nobody is coming forward. No family, she was divorced or something. Most cases that we cater to are where there are nobody. I'll tell you, in the last 3 days, we've done so many cremations, but 4, there was absolutely nobody. Those cases where there is no one, people can reach out to us and we will go out. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆಬೇಕು. ಹಲೋ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಬಾಡಿ ಇದೆ ಸರ್, ಅನ್ಕ್ಲೇವ್ದು. ಒಂದು TCS ಎಂಪ್ಲಾಯಿ 29 ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ಗುಲಾಮನಾಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಗಲಕೋಟವರು, ಬಡ ಕುಟುಂಬ, 8 ದಿನದಿಂದ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರಲ್ಲಿದೆ. ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಹಲೋ ಸರ್, ತಾವರೆಕೆರೆಗೆ. ಓಕೆ 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 ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿರಿ ಇವಾಗ. ಅಲ್ಲೋಗ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಹೋಗಿ. ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ, ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ, ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ, ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ, ಕಾಲಾಯ ನಮಃ, ಕಲವಿಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ, ಬಲಾಯ ನಮಃ, बलप्रभुतनाय नमः, सर्वभूतनाय नमः, मनोन्मनाय नमः। हर एक को हमें काम करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये सब हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। जो भी हमारे को बड़ी मिलता है, जैसा जैसा उनका रूल्स है, उस हिसाब से हमें करते हैं। If people want a burial, they should have a choice. If people want a cremation, they should have a choice. And it should be fast, it should be transparent, okay? And they may be ferrying BBMP vehicles, which people are not able to get. People have to have a long wait. We've heard the BBMP health inspectors themselves say, okay, these private guys are there, you go to them. And private guys are charging a bomb. They're making a killing. Right from 15, 20,000 to even 60,000, 90,000, we've heard of cases. This morning I was supposed to pick up one case from a new hospital. The hospital put so much of pressure, we don't have a mortuary, you please take the body, you do whatever you want. So 3 a.m. they have forcefully released that body. ಅವರು ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಎಷ್ಟು? 30,000. ನೀವು ಇದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್.
ಯಾರಿಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸರ್? ಬಾಡಿನೇ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ್ನ. ಅಷ್ಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡದೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಸ ಇದೆ ನಿಜವಾಗೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನೋ. So I have the phone recording with me. I have shared it with a couple of ICE officers. This is what it is. So all you need to do is put up a system. People can book, and the government can pay off private ambulances or win them away and make alternate arrangements. Put in buses. You can do whatever. So you have to take steps. ನಂದು ಎರಡು ಇರೋದು, ಒಂದೇ ಗಾಡಿ ಎರಡು ಬರೋದೇ ಎರಡು, ಒಂದ್ ತಗೋ ಬರಲ್ಲ ಎರಡು. इसके अंदर हो जाएंगे हमारे यांच हो जाएंगे. Mortuary there will be a boy called Satish, okay, और ಮರ್ಸಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟು ಟೆಲ್ ಸತೀಶ್ he'll cooperate. Don't worry. It may be a half an hour, 45, 1 hour delay, but we will do it. Boring alone, Christian death. We know all diggers, we know all mortuary people, every crematorium who is there in charge, we know, because we've been doing this for 1 year, regular, every day, 10, 12 cases, free. Okay. Now my thing is, see you're stuck here. That's the thing. Huh? Have to wait. ಒಂದ್ ಗಾಡಿ 3 ದಿನ ಆಡೋದು, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮನ್ ಸರ್ ಈಗ ಎಷ್ಟನೇ 21 ಇದು. ಮತ್ತೆ ಕೊಡಿ 21 ಕೊಡಿ. These bodies are left alone because there is nobody in the family. The immediate family may be quarantined. There are so many people who come into the city who have families maybe in some village or some other city. And cases where everybody is scared. Even if there are neighbors, even if they are people are scared to even come and give a helping hand. So there's a variety of cases why people are left alone. आदमी को जब डराएंगे तो जिएगा नहीं, डर के ही आधा वीक होता है, उसके बाद में खत्म. No one is there for prayer, nothing, no family members, nothing. हिम्मत करेगा तो आदमी इंशाल्लाह कोरोना भी ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ हिम्मत में है. अभी बीमारी ऐसे तो हिसाब लगाएं तो बहुत पहले से बहुत से बीमारी आई, इंडिया में आई, चाइना में आई, बहुत से कंट्री में बीमारी आई, लेकिन आज भी इंसान जिंदा है ना. Lord Jesus, have mercy on this family. Give them your salvation, Lord. Lord, once again we thank you for this burial, Lord. ये नहीं कि कोरोना आया तो टोटली ख़त्म नहीं है, आज नहीं तो कल ये ख़त्म हो जाएगा बीमारी, बट इंसान का वैल्यूएशन रखना चाहिए, वैल्यूएशन ख़त्म नहीं करना चाहिए. It does affect. Every death is sorrow, and you feel sad when there is nobody. I wanted to go back to close that. It's over. Nobody. For a human being who would have lived so many years of his life, and on his deathbed, there is nobody for him, you feel sad. This life is not permanent. We are going to go whichever way, whether COVID or without COVID. We wish everybody lives, but death is a reality.
But God Almighty has His own plan. That sadness is there for a couple of moments, and then humans are forgetful. We move on, and there is right now with this kind of situation. For us, it is just a case, and we have to go to the next case. So we keep moving. My wife calls at this time every time. She just called. I said I'm close by. She said, "Are you coming home?" कितने बजे मट्टी मगरिब के बाद निकल गए तो निकल कर मिल जाए